बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब्स्ट्रक्ट जो है इसमें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंटेन्स इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट्स that are comprised with various types of sensors, networks, electronic devices, and process technologies that are integrated and work all together, where the effective and intelligent services are provided to the user। यानी बेसिकली जब हम आईओटी की बात करते हैं तो आईओटी में जो ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं वो इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे सेंसर्स हैं, नंबर 2 पे नेटवर्क्स है, नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और नंबर 4 पे प्रोसेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो हम इंटीग्रेटेड और ये वर्क करते हैं, सब जो है मिलकर ये वर्क करते हैं। स्मार्ट सिटीज़ हैव बीन प्रपोज्ड एज ए सोल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स। स्मार्ट सिटीज़ का एक कंसेप्ट जो है हमने एक सोल्यूशन जो है प्रोवाइड किया है, वो अर्बन प्रॉब्लम्स के लिए हमने इसका एक स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, वेयर द पीपल ऑफ द सिटी कैन लाइव विद मोर कंफर्टेबल बाय यूजिंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। स्मार्ट सिटी का मकसद ये है कि वहाँ लोग जो हैं बड़ी आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। द पर्पस ऑफ दिस पेपर इज़ टू प्रोवाइड थॉरो एनालिसिस ऑफ आईओटी टेक्नोलॉजी विद मेजर फोकस ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क। हमारा इस पेपर का जो मकसद है वो यही है कि हम आईओटी टेक्नोलॉजी को एनालिसिस करें। हमारा मेजर फोकस इस पर होगा प्राइवेसी पे और सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर, अटैक सर्विसेज के ऊपर, वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर होगा। Although the researchers are conducting studies on the services offered and challenges of IoT to make the smart cities effective। अब जो रिसर्चर्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं कि जो सर्विसेज ऑफर्ड की जाती हैं और जो चैलेंजेस जो हैं आईओटी के, उसके ताकि हमारी जो स्मार्ट सिटीज़ है वो इफ़ेक्टिव हो सके, हम उस पे जो रिसर्चर्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं ताकि जो जो हमें चैलेंजेस पेश आ रहे हैं आईओटी के लिए और जो जो आईओटी सर्विसेज ऑफर कर रही हैं ताकि हम स्मार्ट सिटी को इफेक्टिव कर सकें। देयर इज स्टिल सम स्पेस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू हाईलाइट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड कंसर्न्स of user in the area of security and privacy. The requirements and problems of IoT users have been defined. Requirements जो हैं और problem जो है IoT users के have been defined की गए हैं। In order to conduct this IoT privacy and security study, a systematic literature review is conducted. A systematic literature review conduct किया गया है using electronic databases and other sources to search for all articles that met specific criteria, enter information about each research into a personal database, then create summary tables। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि आईओटी प्राइवेसी सिक्योरिटी स्टडी को ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू हम कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के ज़रिए और अदर सोर्सेज के ज़रिए, जिसमें हम तमाम आर्टिकल्स को सर्च करेंगे जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, फिर उसमें हम इंफॉर्मेशन को इंटर करेंगे, देन क्रिएट हम समरी टेबल क्रिएट करेंगे। बॉडी ऑफ रिसर्च कंसिक्वेंटली द पेपर समराइज रिसेंट एडवांसेस इन आईओटी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, हाईलाइट आउटस्टैंडिंग इश्यूज एंड सजेस्ट टॉपिक्स फॉर फर्दर रिसर्च। जो ये पेपर है इसका मकसद ये है कि हम आईओटी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जो रिसेंट एडवांसेस हुए हैं उसको हम हाईलाइट करेंगे, इसके बाद आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट करेंगे और कुछ जो टॉपिक्स जो है वो हाईलाइट करेंगे फर्दर रिसर्च के लिए। दिस इज़ द ऑब्स्ट्रक्ट। कीवर्ड्स में हमने आईओटी, आईसीटी,
information security, privacy, smart city threats, IoT attacks और data security। अब इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है, इन दिस इंट्रोडक्शन मॉडर्न इरा द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ IoT इज़ ए सीरियस इशू। कि हमने कहा कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है IoT की जब हम बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, ये एक सीरियस इशू है। रैपिडली ग्रोइंग फील्ड ऑफ IoT एज द IoT डिवाइसेस बिकम more prevalent in our homes, businesses, and cities. The need for robust security and privacy measures becomes increasingly important। देखिए, जब हम IoT की बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि जो IoT है ये रैपिडली ग्रोइंग कर रही है और IoT डिवाइसेस जो है वो भी प्रिवेलेंट हो रही है, होम में भी प्रिवेलेंट हो रही हैं। ये हर कोई यूज़ कर रहा है इन डिवाइसेस को, जिस तरह सेंसर्स हैं, आपको पता है नेटवर्क हैं, बिजनेसेस में यूज़ हो रही है, सिटीज़ में यूज़ हो रही हैं। तो हमारा जो फोकस है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए दिस रिव्यू पेपर विल एक्सप्लोर द करंट स्टेट ऑफ IoT सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो ये जो पेपर हमारा जो है ये IoT सिक्योरिटी और प्राइवेसी की करंट स्टेट को एक्सप्लोर करेगा, हाईलाइट करेगा की चैलेंजेस को एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस को। वन मेजर चैलेंज इन IoT सिक्योरिटी इज़ द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अमंग डिवाइसेस। सबसे जो मेजर चैलेंज है IoT सिक्योरिटी में वो ये है कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है डिवाइसेस के दरमियान। तो मैनी IoT डिवाइसेस आर डेवलप्ड बाय स्मॉल और emerging कंपनीज विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अब होता है क्या है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं, IoT डिवाइसेस हैं, वो स्मॉल कंपनीज डेवलप कर रही हैं या emerging कंपनीज डेवलप कर रही हैं जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, विच कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स। इससे ये है कि ये फिर इससे मुश्किल हो जाता है कि हम स्ट्रॉन्ग जो है सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सके। एडिशनली दीज डिवाइसेस ऑफन यूज प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मेथड्स which can make it difficult for security researchers to identify and address vulnerability। ये डिवाइसेस जो हैं वो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती हैं और कम्युनिकेशन मेथड, जिसको तो इसलिए मुश्किल हो जाता है फॉर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए कि आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना वल्नरेबिलिटीज़ को। ठीक है जी, ये सब हमारा था मेन इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइवेसी। सिक्योरिटी जो है बेसिकली एक अम्ब्रेला फ्रेज है हिंटिंग टू ए लार्ज एंड डिस्टिंक्ट assemblage of linked things according to Solov। According to Privacy International, security is a multi-dimensional concept that can be divided into 4 parts। जो सिक्योरिटी है उसको हम बॉडी में, कॉरस्पोंडेंसेस में, डोमेन में और डेटा में। तो रियल सिक्योरिटी इज सेंटर्ड ऑन पीपल हैविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी आउटसाइड हार्म। तो बेसिकली सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं आउटसाइड हार्म से। द स्पोर्टिंग ऑफ द डेटा दैट इज ब्रॉड बिटवीन टू गैदरिंग्स और एनी चैनल इज एट द हार्ट ऑफ एक्सचेंज सिक्योरिटी। दिस इंक्लूड्स फोन, मेल and email, setting boundaries or cut-off points of real estate such as the house, workplace and public places is related to regional security. Data security refers to the protection of private information gathered and managed by a body such as medical records and related records. Privacy threats जो हैं these days it is significantly harder for us to hold our security as the Internet of Things advancement assume control over our day-by-day lives. Crashes over how connotations can acquire to particular information are inevitable, and IoT will add to this. Ziggeldorf's writing audit lists the most well-known security dangers in IoT. Identification is the main risk that connects an individual element and identifier such as a name and address.
localization, and following are risks associated with discovering someone whereabouts using different tools such as GPS, online traffic, or mobile phone area. In internet business, profiling is most used for customization. For example, in bulletins and commercials, instead organization set up information about people to determine interest through connections to various profiles and data sources. ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ है. तो basically data security is the abbreviation for the approach and ways of thinking that are used to ensure data, information and framework. यानी आपने डेटा को सिक्योर करना है बेसिकली. ये हमारे पास लिटरेचर व्यू हमने इसका दिया हुआ है. अच्छा जी, अब हम मेथडोलॉजी की बात करते हैं. अब इन दिस पेपर द SLR procedures adopted and Prisma method for the applications of IoT offer in the smart cities. तो स्टेप 1 है प्लानिंग. तो प्लानिंग जो है उसमें हम करते हैं कि जो हमारे पास रिसर्च क्वेश्चंस है, व्हाट इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी IoT इन स्मार्ट सिटी इन्वायरमेंट, हाउ डू यू सिक्योर द IoT इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस और इश्यूज यूजिंग IoT टेक्नोलॉजी, हाउ डू टू मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ IoT इन पार्टिकुलर एरिया इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी. This is the first planning, identifying the need of the research, review, make some research questions, setting some measures and evaluates the research, conducting identification of research, primary data selection, data refining and synthesizing, reporting, making report, discussing some challenges or issues, propose solution on future concerns. तो step number 2 है conducting review. This research began, we are looking through the survivor writing by utilizing journal keywords to get whatever number of applicable papers as could reasonably be expected. A few online data sets were utilized to cover a wide scope of scholastic distribution. The online data sets were utilized are Google Scholar, Springer, IEEE Explorer SS, ResearchGates, ACM Digital Library, and also other Web of Science. These data sets are viewed as applicable and give high effect factor distribution. To play out the programmed search, focus on security and privacy of the Internet of Things, and some related issues were distinguished depend on the examination question of this review. Figure 3 displayed at how the data of research paper collected from the electronic databases. Identification, searching through database, searching through other sources, n is equal to 5. And after removing of duplication, record screened, record excluded, abstract screened, record excluding, and full text assessed for legibility, excluded full text articles, and full text studies are articles qualitative in this review, 35 articles from Prisma technique. Table here describes the detail of all final consideration of research papers, book chapters and other related materials with citation, reference, published year and the name of all publishers and data sources. There are 35 selected articles of the most relevant to a study of the famous electronic database. Look at this: ACM, publisher name ACM and reference number 31, and AETIC 7, and elsewhere 13, 18, 20, 23, 24, 28, 32, 33, and FCFs 1, and Hindawi 15, ICITSI 12, IEEE 2, 6, 10, 11, 17, 21, 26, 29, 8, IJSRC SEIT 27, IJTRA 9, and JP University of Information Technology 5, John Ville and Sons Limited 14, MDPI 19, 25, 34, Routledge 3, Springer 4, 16, 22,
30, 35. Shows the table in term of graph, the publisher names and this. Look at this graph of publishers, publisher name and number of publications. Look at this. Now we introduce the reporting. Studies identified in the reviews were analyzed against the background of identified research question using thematic analysis, which systematic identifies domains of security, privacy, applications, and services. Some of the challenges, threats, and other related issues are also determined to build smart city environment in more secure and trustable order to answer the research question. Then the report is built to answer the research question, result, and discussion. This section shows some findings to according to systematic literature review of the security and privacy in the smart cities environment. Some security applications and services offered in the scenario of modern digital era. Table 3 shows the major security issues. Those have been found in the selected research papers as in IoT smart city environment. Look at this. References में है data privacy, authentications, availability of data, data integrity, data access, data confidentiality, identification, access control, device security, other issues. ठीक है जी, ये हमारे पास है. सी मीन्स रेफरेंस पेपर है. सी का मतलब रेफरेंस पेपर. हैव कवर्ड सिक्योरिटी इश्यूज, जो कवर्ड करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज. एंड वेर एन मीन्स नॉट कवर्ड, जो नहीं कर रहे सिक्योरिटी इश्यूज, वो हमारे पास है एन. तो सम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी challenges are determined in the following table 4 and major domain of IoT security and sub areas of security and privacy is given in table 5. Description big data, handling of big data in secured way on the IoT networks 10 और 13 जो रेफरेंस पेपर है. इंटरऑपरेबिलिटी रेफरेंस पेपर 12 है. लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज 3 और 9 है. मेंटेन ऑफ प्राइवेसी 4 है. स्केलेबिलिटी 1 और 7 है. ट्रस्ट बिल्डिंग 3 और 5 है. ऑटोनोमिक कंट्रोल 2 और 6 है. एसेस कंट्रोल 8 और 9 है. इंटरप्शंस और इंटरफ्रेंस कंट्रोल 2, 12, 13 है. एडवांस परसिस्टेंट अटैक 31 है. डिज़ाइन इशू 32 है. स्मार्ट सिटी मेन डोमेन स्मार्ट सिटी डोमेन ऑफ IoT सिक्योरिटी रेफरेंस 2 है. स्मार्ट सिटी 3 और 11 है. ICT 4 है. IoT सिक्योरिटी इस तरह सो ऑन, ये आपके सामने है. हम कंक्लूजन पे क्या करते हैं. इन दिस रिसर्च द ऑथर्स गेट सम लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज स्पेशली इन IoT बेस्ड स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हमारे पास एक लिस्ट हमारे पास आ गई है. और जो इश्यूज़ की सिक्योरिटी और प्राइवेट इश्यूज़ की ये आपके सामने देख सकते हैं आप. स्मार्ट सिटी में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ट्रैफिक मॉडलिंग रेफरेंस नंबर 2. ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ इश्यूज आ रहे हैं. सब एरियाज़ ये ऊपर आप देख सकते हैं. सिक्योरिटी और प्राइवेसी चैलेंजेस जो है, हैंडलिंग ऑफ बिग डेटा इन सिक्योर्ड वे ऑन द IoT नेटवर्क. दिस इज़ द हमारे पास ये हमने चैलेंज कुछ निकाले हैं. सब एरियाज जिस तरह IoT सिक्योरिटी ऑथराइजेशन स्कीम थ्रेट्स वीकनेसेस एंड चैलेंजेस आ रहे हैं. तो इट इज़ डन थ्रू कंडक्टिंग सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू. IoT in smart city has now become the need of current age. The needs to get services at their doorsteps are in a manner where required minimum effort, less use of resources, saving their times, cost effective, reliable. All of above, more secured in every aspect is the main objective. So this can be achieved through the use of ICT, IoT enabled smart city having the capability to facilitate the people of that city and by deploying security mechanism in efficient manner. This can be achieved properly as in this review the author finds the various areas where more work are needed to make IoT services trustworthy for the betterment of living people. This research presents an overview of the most important IoT concept
with an emphasis on the security concerns and difficulties associated with IoT devices। यानी ये जो हमारी रिसर्च है, इसका जो मेन मकसद जो है कि हम इम्फसाइज कर रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर, और जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जो एसोसिएटेड हैं विद IoT डिवाइसेस के साथ, उसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं ताकि उसको हम ओवरकम कर सकें और उन डिफ़िकल्टीज़ को हम रिमूव कर सकें। थ्रेट्स और वीकनेसेस जो हैं एंड माइट प्रिवेंट यूज़र्स फ्राम अडॉप्टिंग IoT टेक्नोलॉजी हैव बीन डिटेक्टेड। अब मेन चीज़ क्या होती है कि हम जो IoT टेक्नोलॉजी है, इसको IoT की जो इसमें जो थ्रेट्स आते हैं, जो इसमें वीकनेसेस हैं, वो हमने डिटेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से इसको हम जो है लोग जो हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते IoT को। इन ऑर्डर टू डेवलप ए रिलायबल एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म विच कैन इंक्रीज कंज्यूमर एक्सेप्टेंस of the technology, we have highlighted a number of security and privacy challenges that the researcher community has to address. In order for people to use IoT devices to exchange information globally with assurance of trust and security, there is urgent need for research centers in this field to address these security pitfalls and barriers in IoT-based infrastructures। अब हमें क्या है, जो हमने अभी आपके सामने सिक्योरिटी पिटफॉल्स एड्रेस किए हैं और बैरियर्स जो IoT बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में किए हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको सॉल्व करें, ताकि जो है जो हमारी जो IoT सिक्योरिटी है, IoT जो है उसको हम स्मार्ट सिटीज़ में जो है वो उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें और लोगों की ज़िंदगी को आसान कर सकें। द फ्यूचर वर्क क्या हो सकता है? द मोस्ट इशू दैट इज़ आस्किंग टू बी टेंडेड is to revamping the use of security in IoT for engineers without thorough learning of IT security. Planning and carrying out security ensures that is fundamental for planners to use is an outright necessity for the fate of IoT. Speed and cryptographic quality is especially fundamental in the Internet of Things. However, the issue of security is equally pressing. Future research should assess the security insight identified with the IoT and to see whether individuals will act to ensure their own security when using the IoT. In addition, we must determine whether they will respect and use administrative tools that explicitly prevent security intrusions by IoT devices. Making IoT system more secure, efficient, and effective is a big challenge, especially handling big data in real time. Therefore, researchers should focus on enhancing the security, integrity, efficiency, and reliability of IoT-based smart cities. We appreciate to Dr. Imran Tariq for such a great and useful supervision throughout this work. Authors declared that have no conflicting interest to report in this work. Thanks for watching.